Hello, am I audible? Just a minute, let me check. Like, hello, 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 hello. Wait a minute. Hello, 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 hello. Wait, let me put my laptop in charge if it is 20%. So there might also like my charge will go down. चलो, अब तो चार्ज में दे दिया. Hello, hello, hello. Yeah. Yeah, it's audible. It's audible right now. So today we will be doing a live doubt clearing session again. So like we did yesterday, and let me tell you one thing that whenever you send a chat, it will take some time to reflect in my chat screen. I mean in my screen or in my live chat. So once I receive the chat, I will then only can reply. So first of all, I'm saying sorry for that because there will be a delay, but no need to worry. I will make sure that your each and every doubts are cleared in my live session, means in today's live session, and I will help you out in any way. No need to worry about it. So any live chat, live doubts. Okay. Let me first write something like doubt clearing session. Doubts clearing sessions. Okay. In message. Where is it? So any. Oh hi. Yeah. Hi Vikas Raj. How are you? I got my first chat. So hi Vikas Raj. Long time. Not long time actually. We talked yesterday. Wait. Let me greet you. Welcome to my live stream. So, how are you, brother? How are you? Like, वेलकम बैक अगेन. लाइक आई थिंक आप कल भी आए थे मेरे लाइव स्ट्रीम में, मेरे को याद है. आई थिंक नहीं, आप आए थे, मेरे को याद है. आप 2 बार आए थे. आप शायद कल का मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में भी आए थे, और कल का रात वाला लाइव स्ट्रीम में भी आए थे. तो वेलकम. और हाय, कैसे हो? आई होप आपको वो वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम वाला मैसेज मिल गया होगा. मैंने यहाँ से सेंड कर दिया. आई होप वहाँ पे मिल गया. वहाँ पे डिले ना हो, मेरे को तो वही लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिले होता है, तो इसीलिए. पाइथन का थोड़ा मोड़ा जो काम बचा है दिन का, वो कर लेता हूँ, जितना भी बचा हुआ है. वो कंप्लीट करता हूँ, और साथ ही साथ आप सबका डाउट भी क्लियर आउट करूँगा, and I will also clear out everyone's doubt. So please write in my live stream so that it would be easy for me to ask. Means easy for me to read all the live chats or questions or something, and I can answer it back. So जब सॉरी जब तक चैट्स आते हैं तब तक मैं वेट करता हूँ. तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, या तो क्वेश्चन इन द सेंस जो भी काम है. क्वेश्चंस तो नहीं, मतलब क्वेश्चंस क्लाइंट के साइड से है, बट एनी हाउ रिक्वायरमेंट सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चंस बोलने से बेटर है. Okay, it's
क्यों दिखा रहा है लेंथ? ओके, नो इशू. Okay, please send your messages. I'm ready to answer. Anyone, anything, any doubt you have related to SQL or Python or data analysis, or या तो career related to data analysis, I am ready to answer it. Related to SQL, TA, Python or career related doubts. ओके, विकास राज, भैया एक बात पूछो. हाँ, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो, बिल्कुल पूछ सकते हो. मैं चाहे तो यहाँ पे मेल आईडी भी दे दूँ, आप चाहे तो लाइव चैट में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मैं आप एक्चुअली आपका मैसेज अभी आया है मेरे पास, तो सॉरी अगर आप पहले भेजो, मतलब आप पहले ही भेजे होगे, तो मेरे पास अभी रिफ्लेक्ट किया, सॉरी फॉर द डिले. पूछो, आपको क्या पूछना है, आप मैसेज किए भैया एक बात पूछूं, बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं. @classes_with_me@gmail.com मेरा मैंने मेल आईडी भी दे दिया है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, एवरीवन. And let me tell you one thing, feel free to ask me any doubts related to SQL, data analysis, Python, or even career guidance. I am here to help you live during the stream, and I have also shared my mail ID, email ID, mail ID in the live chat in case you would prefer to reach out there. I'm ready to help you, and there will be a slight delay in message. I mean the live message chat or something what it is. So sorry for that. Sorry for the inconvenience. Just which message does I have? Anything, any doubt, कोई दिक्कत नहीं. I will clear everyone doubt, so no need to worry about anything. Oh, एक मिनट, यहाँ पे फाइल भी ओपन करना पड़ेगा बिकॉज क्लाइंट ने बोला था. आई एम रेडी फॉर डाउट्स, एनी डाउट्स आई एम रेडी टू सॉल्व इट. आई एम सेइंग अगेन, फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट्स रिलेटेड टू SQL, DA means data analysis or data analytics, Python, or even career guidance related to all these streams. I am here to help you during the stream. I have also shared my email ID in the live chat in case you would prefer to reach me out there, right? Any doubt, no need to worry. ओके, विकास ने मैसेज किया मुझे, मेरा एक वेट अ मिनट, हाँ, मेरा एक डाउट है, पता नहीं सही
से पूछ पाऊँगा कि नहीं। अरे सही से पूछना क्या, डाउट तो डाउट होता है भाई, सही गलत कुछ नहीं। आपके पास पूरा टाइम है, अगर आपको लगता है आप कहीं गलत किए हो तो मेल आईडी भी है, और मैं तो लाइव हर दिन आ रहा हूँ। नो नीड टू वरी अबाउट, अब बिल्कुल बिंदास पूछो, सही गलत कुछ नहीं होता है, सब दिमाग में रहता है। आप डोंट वरी, जस्ट आस्क। मुझे भैया सीक्वल, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, स्टैटिस्टिक्स आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। पावर बीआई का पता है, लेकिन सीक्वल हो या पाइथन या एक्सेल मचा। अच्छा, ओके। और एक उन्होंने मैसेज किया है, नेक्स्ट मैसेज भी अभी आया है कि इसमें अपना डेटा को फिल करें, जैसे सीक्वल में भी डेटा क्लीन होता है, पाइथन में भी होता है, मीन्स पैंडास लाइब्रेरी से फिर एक्सेल से होता है, तो कैसे वर्क करता है। ओके, तो अभी के लिए मेरे पास 2 मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ है। हाँ विकास, तो मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये बोलूँ कि डाउट तुम जो पूछ रहे हो बिल्कुल सही पूछ रहे हो, नो वरीज एट ऑल। मैं क्लियरेंस दे दिया हूँ, आप जो डाउट पूछे हो बिल्कुल सही पूछे हो, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जब हमें सीक्वल, पाइथन, पाइथन इन द सेंस पैंडास, पाइथन मतलब पैंडास और नमपाई, मैक्सिमम तो यही यूज़ होता है। मैटप्लॉटलिब भी होता है, बट ज़्यादातर लोग पैंडास और नमपाई यूज़ करते हैं। एक्सेल या पावर बीआई आपको आता है, नो डाउट, दैट्स अ गुड थिंग। तो डेटा क्लीनिंग या फिलिंग किस टूल में करें, क्योंकि सब में हो जाता है, आप यही पूछ रहे हो, राइट। तो अगर मैं बोलूँ रियल वर्ल्ड में, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स और डेटा कहाँ से आ रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है भाई। देखो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ या सिंपल सा चीज़ बोलूँ कि सपोज़ आपको बिरयानी बनाना है, तो आपको पता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको बिरयानी बनाना है, राइट। तो बिरयानी के लिए आपको जो जो सामान चाहिए आप लेके आओगे, सिंपल सा बात, आपको रिक्वायरमेंट पता है, आप लेके आओगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे आपको सपोज बोल दिया है बिरयानी बनाना, और आप क्या किया, सिर्फ चावल ला के गर्म कर दिया और बोले हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। आपको हर चीज़ रिक्वायरमेंट के ऊपर चाहिए। देखो, रिक्वायरमेंट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ओनली सिंपल राइस और एक जगह बिरयानी, 2 चीज़ है, दोनों में राइस यूज़ होता है, राइट। अब दोनों में राइस यूज़ होता है, मतलब सपोज़ दोनों में सीक्वल यूज़ हो रहा है, दोनों काम के रिक्वायरमेंट में। अब सपोज़ कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आया जहाँ राइस के साथ सब्जी भी चाहिए, आई मीन टू से जहाँ सीक्वल के साथ पाइथन भी चाहिए, वहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट और डेटा कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और अगर मैं मतलब आप जैसे बोले सीक्वल, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, अगर मैं उस तरीके से बोलूँ तो जैसे मैं एक एक चीज़ का बताऊँगा। सीक्वल का पहले बोलता हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सीक्वल, राइट, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा थर्ड कंपनी में मैंने पाइथन यूज़ करना स्टार्ट किया, पहला और दूसरा कंपनी में सीक्वल ही था, थर्ड कंपनी में सीक्वल प्लस पाइथन। तो सीक्वल मैं बोलूँ तो हर जगह यूज़ आता है, और मोस्टली यूज़ होता है जब डेटाबेस में होता हो, राइट। मतलब डेटा क्लीनिंग वहाँ करते हैं, जस्ट लाइक यूजिंग वेयर, केस वेन, नल, हैंडलिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक। सेकंड आता है पाइथन। पाइथन अगर मैं बोल रहा हूँ तो पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, राइट। जब हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लीनिंग करते हैं या मान के चलो ऑटोमेशन बनाना होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मल फ्लेक्सिबल नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लार्ज डेटा सेट या उसका मतलब लॉजिक बिल्डअप करने के लिए लार्ज डेटा सेट में पाइथन का बहुत हेल्प होता है, आई मीन टू से बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए। थर्ड चीज़ आप पूछे कि लाइक एक्सेल, एक्सेल जैसे छोटा मोटा फाइल, जैसे क्विक मैनुअल क्लीनिंग, या जब सपोज़ आपका स्टेक होल्डर या आपका क्लाइंट ने दिया हो एक्सेल फाइल से, तो अगर कुछ जल्दी कुछ काम करना है और डेटा भी कम है, मतलब रोज़ भी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए एक्सेल काम आता है। यूज़फुल है बट काम आता है, यूज़फुल फॉर क्विक चेक, अगर मैं स्पेसिफिसिटी में बोलूँ तो। और चौथा आपने पूछा पावर बीआई, तो पावर बीआई क्या है, वो फाइनल स्टेज है, फाइनल रिपोर्टिंग, फाइनल स्टेज। जब आप सब कुछ क्लियर आउट कर दोगे, और क्लियर आउट करने के बाद जब आप जाओगे सपोज मीटिंग में सब कुछ बताने, लाइक फाइनल रिपोर्टिंग के लिए,
या फिर आप, या तो आपके मैनेजर या फिर आपके स्टेक होल्डर जो भी, इसमें पावर क्वेरी में क्लीनिंग हो सकता है। जैसे आप क्लीनिंग का बोल रहे हो, पावर क्वेरी में क्लीनिंग हो सकता है, पर मेजर क्लीनिंग जो है, मेजर क्लीनिंग वो सीक्वल या पाइथन में हो जाता है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी में मोस्टली पहले सीक्वल से रॉ डेटा फेच होता है। जितना मैं सीखा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 साल 7 महीने का या 5 साल का एक्सपीरियंस जो भी मान के चलो, उसमें मैं बोलूँ तो पहले सीक्वल से रॉ डेटा फेच होता है, फिर पाइथन से क्लीन होता है, छोटा हुआ तो एक्सेल से भी क्लीन हो जाता है, और लास्ट में पावर बीआई में दिखाया जाता है डैशबोर्ड के थ्रू कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसे क्या हुआ, क्या रैंकिंग है एंड ऑल दैट, राइट। तो तुम कंफ्यूज मत हो, टूल्स अलग हैं, काम एक ही है, डेटा को क्लीन और रेडी बनाना। सो दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा। ओके, और एक विकास ने डाउट पूछा है, और यहाँ पे तुषार भी नए आए हैं हमारे लाइव स्ट्रीम में, उनको मैं ग्रीट कर देता हूँ। विकास 2 मिनट, जस्ट। हाय तुषार, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। तो विकास ने वापस, ओके, तुषार का पहले एक छोटा सा डाउट है, लाइक आप रोज़ कितने बजे लाइव आते हो? देखो, अभी तो क्या है कि घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं हालांकि 2 बार लाइव आता हूँ, ठीक है। दूसरी बार आता हूँ, मतलब सेकंड जो रहता है वो रात का टाइम रहता है, और इसमें मैं वर्बल रहता हूँ जितना भी डाउट क्लियरिंग का, राइट तुषार? आई होप आप हैं लाइव में, बिकॉज क्या है कि चैट थोड़ा लेट में आता है मेरे इसमें, बिकॉज वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ क्लाइंट का काम के कारण। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं 2 बार आता हूँ लाइव दिन में। एक सुबह रहता है, सुबह मैं उतना बोलता नहीं हूँ, वर्बल नहीं रहता हूँ, बिकॉज घर का काम चल रहा है तो आवाज़ बहुत रहता है, और मैं माइक का साउंड भी कम किया रहता हूँ, तो बस कीबोर्ड का साउंड है उतने तक रहता है मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में। और जब रात का टाइम है, जो अभी का टाइम है, उस टाइम मैं वर्बल रहता हूँ, बिकॉज घर का काम भी बंद हो, मतलब जो रिनोवेशन का काम चल रहा है वो बंद रहता है, तो आप और मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकें, बैकग्राउंड नॉइज़ भी ना हो, इसीलिए। तो कितने बजे, देखो सुबह ऐसे तो मैं बोलूँ 11 o'clock या तो 10:30, कभी कभार 12, बट मैं कोशिश करूँगा, एक बार ये घर का काम कंप्लीट हो जाए ना, तो मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग 8 o'clock या मैक्सिमम मॉर्निंग 7 बजे लाइव आने को, ताकि मैं आप लोग को पूरा टाइम दे सकूँ, आप एनी टाइम आके मेरे से डाउट पूछ सको, राइट। तो अच्छा, अब चलते हैं विकास के डाउट पे। सॉरी विकास, एक्चुअली तो ये हो गया। विकास में क्या पूछा था? अच्छा, किस में, अच्छा ये सेकंड जो डाउट पूछा आपने, ये शायद मैं क्लियर आउट कर दी हूँ, लाइक किस में आपने डेटा को फिल करें जिसमें सीक्वल में भी डेटा क्लीन हो। ओके, ये तो डाउट क्लियर हो गया। और कुछ डाउट्स, और कुछ डाउट्स? और तुषार, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर आउट किया हुआ है। इफ़ नहीं तो आप वापस पूछ सकते हो, और मेरा मेल आईडी भी है उसमें। ओके, विकास ने वापस 2 लाइव चैट भेजा है। पहला ये है कि डेटा एंड टाइम फंक्शन सीक्वल में भी है, एक्सेल में भी है, डैक्स फार्मूला में भी होता है। डैक्स मतलब पावर बीआई होता है। कॉन्सेप्ट सेम सेम, बट यूज़ कौन से टूल से करें या लैंग्वेज से करें? ओके, मुझे ये बताओ भैया, कौन सा डेटा कौन से चीज़ से फिल करें? ओके, मतलब अगर मैं इसको एक नॉर्मल वे में बोलूँ, आई मीन सारे डाउट्स को एक साथ करके नॉर्मल वे में बोलूँ, तो आप ये पूछ रहे हो, आई मीन सबके लिए ये बोल रहा हूँ, ये मतलब विकास ये पूछ रहे हैं कि डेट एंड टाइम फंक्शन सीक्वल में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, डैक्स में भी। कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है, पर कन्फ्यूजन ये होता है कि किस टूल या फिर लैंग्वेज का यूज़ करें, मतलब कौन सा डेटा किस टूल से फिल करें या क्लीन करें। आई होप आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो इसका मैं लाइक सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, और पिछले बार की तरह मैं स्पेसिफिकेशन वे में दूंगा, लाइक सीक्वल, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, ठीक है। सबके लिए एक एक लाइन बोलूँगा, लाइक कैसे क्या क्लियर आउट, मतलब कैसे क्या काम आता है, ताकि आपका भी डाउट क्लियर आउट हो।
सीक्वल से स्टार्ट करूँगा। देखो, जब डेटा डेटाबेस से आ रहा हो, सपोज़ जैसे माई सीक्वल या फिर मेरे कंपनी में जैसे डेटा सेंटर करके वेबसाइट है इन लोगों का खुद का, वहाँ से, तो जब डेटा डेटाबेस से आ रहा हो तो पहला काम सीक्वल से होता है। डेट टाइम क्लीनिंग या फॉर्मेटिंग यहीं पे होता है, राइट। सपोज डेट फॉर्मेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट, फिर एक्सट्रैक्ट। जैसे आप देखे होगे मेरा लाइव स्ट्रीम में मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, बहुत बार देखे होगे, लाइक एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम ऑर्डर डेट या फिर एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेस काइंड ऑफ, अगर आप देखे होगे लाइव स्ट्रीम तो। तो वहाँ पे लाइक सीक्वल में डेट टाइम क्लीनिंग हो जाता है जब डेटाबेस से डेटा आ रहा होता है, राइट। सेकेंड, पाइथन। पाइथन का कब काम आता है? जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगता है, मतलब जैसे ऑटोमेशन बनाना हो, जैसे कि मतलब आप एक्सेल या .csv फाइल आप मतलब ला रहे हो, तो मतलब डेटा फ्रॉम एक्सेल या .csv से टू पैंडास, तो यहाँ पे एक पैंडास का फंक्शन यूज़ होता है, pd मतलब import pandas as pd, तो वहाँ पे pd यूज़ किया जाता है। तो pd.to डेट टाइम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ये वाला फंक्शन यूज़ होता है जहाँ पैंडास में यूज़ होता है, आई मीन। तो इस जैसे फंक्शन का काम आता है और ये बहुत अच्छा फंक्शन है, मतलब मल्टी स्टेप क्लीनिंग होता है। pd.to अंडरस्कोर डेट टाइम ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक। थर्ड हो गया एक्सेल। एक्सेल क्या है? जब सिंपल सा बात, जब डेटा बहुत छोटा हो तो मैनुअली क्लीन आउट कर सकते हैं। आई मीन जैसे टेक्स्ट हो गया, डेट इफ़ हो गया, नाउ, इस टाइप के फार्मूलाज यूज़ होता है एक्सेल में क्विक फिक्स के लिए। मतलब उसके कंडीशंस क्या है? डेटा छोटा होना चाहिए और मतलब आपको पता है कि हाँ आप कर लोगे, इजीली कर लोगे बिना एक्सेल क्रैश किए, तब एक्सेल का यूज़ होता है जब डेटा छोटा होता है तब। और फोर्थ रहा, आपने पूछा डैक्स के बारे में, तो पावर बी आई डैक्स मतलब पावर बी आई सिंपल, ये मोस्टली रिपोर्टिंग लेयर पे होता है। मतलब अगर किसी रीज़न से डेट को एडजस्ट करना हो विजुअलाइजेशन के लिए तो डैक्स का यूज़ होता है, राइट। और अगर मैं आपको एक वन लाइन में बोलूँ, लाइक रियल लाइफ वर्क फ्लो में, तो फर्स्ट आएगा रॉ डेटा, देन सीक्वेंस में क्लीनिंग, देन पाइथन या फिर एक्सेल में प्रोसेसिंग। पाइथन एक्सेल एक ही जगह जोड़ रहा हूँ बिकॉज एक्सेल का उतना काम नहीं आता है, बट डिपेंड्स, प्रोजेक्ट पे डिपेंड्स। और लास्ट है पावर बी आई, उसमें जो फाइनल रिपोर्टिंग में अगर कुछ डेट चेंज करना हो या एडजस्ट करना हो तो टूल का सिलेक्शन डेटा का सोर्स, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और टीम सेटअप पे डिपेंड करता है, राइट। और एक चीज़ याद रखना कि जो काम पहले कर सकते हो, सपोज़ अगर आप सीक्वल या पाइथन से वो काम कर सकते हो, तो वो रिपोर्टिंग टूल पावर बीआई और एक्सेल पे ना लेके जाओ, पहले ही क्लीन कर लो। अगर आपको एक सजेशन दूँ तो अगर आप स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ को सुधार सकते हो सीक्वल या पाइथन से, तो पहले ही कर लो। ऐसा नौबत ना आए कि एंड में आपको पावर बीआई में ठीक करना पड़ रहा है, मतलब मीटिंग चल रहा है और वहाँ पे आपने आप को पता चला कि आपने गलती की है। तो ऐसे नहीं है कि एकदम एंड में जाके आप चेंज करोगे डेट टाइम, वहाँ पे आप एडजस्ट करोगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में अगर हो जा रहा है क्लीनिंग वाया सीक्वल या पाइथन, तो दैट्स अ गुड थिंग, मैं तो बोलूँ, राइट। तो डाउट पूछते रहो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, लाइक मेरे को तो लग रहा है आप बहुत डीप डाइव किए हुए हो, विकास, आई मीन टू से। और एनी मोर डाउट्स? ओके, शिवा साई, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू माय live stream. Okay, how to get projects like you for freelancing? Say first thing first, I would say I got this projects from Reddit and one project from LinkedIn. Like this is my eighth project. Let me be frank with you. This is my eighth project. First project was from Reddit. Like in Reddit, I have just like DM'd lots and lots of freelancers and clients about my
about my work ex and all. So from there I received my first project, and it was a small project for only, like, it lasted only about 2 days because the project was small. Second project was from LinkedIn, and third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth, these all projects were from Reddit itself, because in Reddit there are lots and lots of clients who are like using a proper keyword, like hashtag keyword that we use uh, for finding, freelance gigs like you, I would say. So this is the first project where I got from, and this is how I get project. And let me tell you, project depends on your experience and how you uh, pitch yourself. I mean to say, how you tell your experience to your clients, like what you know, what you can do, like that. So that's all about how I got my first project. And this is okay. You have got one more follow-up question, like where did you learn SQL and Python data cleaning? I am starting up. What all the concept do you recommend to learn first uh, to start practicing? Okay. mm, Let me tell you, like, uh, in my first company, where when I was in college, from there I have learned my like in college they have taught me SQL, not much, but okay kind of thing, like okay SQL, like, in fourth year nobody studies in college, so that time they have taught us SQL and Tableau. And in my first company where I was working as an inventory specialist in warehouse, there I was using SQL, although my work revolved around uh, I mean Excel. 80% of work was in Excel and 20% of work was in SQL. So there where I got my first experience. And if you ask me where do I learn, so it was mostly self-taught, because that era was, I think it was a Geo era. Like, I am 2013-17 batch pass out. That time Geo came first time, and from that curiosity we have used YouTube and W3 school website to learn SQL and Python. And let me tell you, it is mostly, self-taught, like YouTube, free course, and consistent practice. Like every day we have to practice from where, like, first of all, in WorkX I used to, like, work on SQL database, not much, but still we have to work. And when I get back home from my from my duty, that time 2 hours I would say I have to study SQL, like self-taught SQL. And if you ask me where should I learn, okay, I would say W3 school for SQL, Pandas for SQL, and for Pandas you can go for YouTube channel. You can also read documentation, but let me tell you one thing, documentation is very boring, so better go for YouTube. And in YouTube you, like, see, like, there are lots and lots of videos are there in YouTube. So each and every teacher in YouTube have their own style of teaching. So whatever, like, I would say whatever video you like, I mean whatever teaching you like from that YouTube teacher, and it's set up in your mind, then stick to that video, stick to that playlist, and study with them. That's it. That's what I'm saying. For beginners, like, you have asked me, yeah, I would say for beginners, here what I recommend: SQL, go for, like, select where, group by, join, window function. In window function you should go for row number, rank, lag, lead, date function, date time function, main thing. For Python, like how to read CSV files, handling missing data, then group by, then like group by you would say like pd dot merge, like that. Filtering, merging, same thing. Date time formatting,
In Excel, if you go, better check out VLOOKUP. That's the main thing, VLOOKUP and pivot. And data cleaning means removing duplicates, that's it. And text to column, these are the two main thing in Excel. So I would suggest you, like Shiva, start practicing small problems daily. I would say even 30 minutes to 1 hour is enough if you are consistent then. And make sure to do a mini project. There are lots and lots of project in Google. So there are lots and lots of mini projects are there. Pick up a project and work on it, so that you would get a real life experience of how data analysts work and all. And you will be project ready in no time, let me tell you. At least give 3 months to 6 months, you will be project ready, or you will be like job ready. No need to worry about. And ask anytime, I am here to guide you, right? So any more doubts, any more doubts? Any more doubts? Like, I haven't received any chats right now. So any doubts? Any doubts? Okay, okay. Vikas has sent one more doubt. Just a minute. Just a minute. Yeah. Okay. Just a minute. No, no messages from the client. ओके विकास, आई थिंक लाइक भैया एक बात और, फ्रेशर हूँ, मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर सीक्वल का है, लेकिन आप बोले हैं भैया कि एक डेटा सेट पे काम करूँगा जैसे कंपनी काम करती है। आप एक सिमिलर वीडियो बनाओ ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँ। ओके, ओके, नो इशू। देखो, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो डजेंट मैटर। अगर आपको सीक्वल के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ऑलरेडी एक बिग स्टेप ले चुके हो एंड यू आर वन स्टेप अहेड। और मैं जो बोल रहा था कि लाइक कंपनी जैसा काम करना है एंड ऑल, उसमें एक डेटा सेट लेके डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस और फाइनल रिपोर्ट बनाना होता है। दैट आई हैव टोल्ड यू करेक्ट। लाइक डेटा सेट के लिए ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि एक फुल बिगनर फ्रेंडली वीडियो बनाने का, बिकॉज देखा हूँ बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं जिसमें कि मतलब सीक्वल से डेटा फेच करने का रहे, या फिर पाइथन या एक्सेल में क्लीनिंग करें, उस टाइप का कुछ अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। और एक लास्ट में एक रिपोर्ट बनाना है पावर बी ऐसे, अगर आप यही पूछ रहे हो तो ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं। लंबा वीडियो होगा बट ठीक है, लाइक बहुत रिक्वेस्ट आए हैं लोगों से, तो इट इज़ ओके, लाइक मैं बनाऊंगा ये वीडियो। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, लाइक मैं इजी बनाऊंगा ये वाला वीडियो ताकि आप वो वीडियो फॉलो कर पाओ लाइन बाय लाइन। लाइक जैसे कंपनी में काम होता है, लाइक पूरा डिट्टो मतलब सेम टू सेम वैसा तो नहीं बना पाऊंगा जैसा कंपनी में काम होता है, बिकॉज कंपनी में क्या है कि हर 2-2 3-3 घंटे में रिक्वायरमेंट्स चेंज होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा फिक्स आपको यही करना है एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है। तो फिर भी मैं उतना डिटेल काइंड ऑफ वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख के फॉलो अप कर पाओ लाइन बाय लाइन, करेक्ट। एंड थोड़ा टाइम दे दो। मैं हो सके तो प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा, और लाइव में अपडेट भी कर दूंगा। मैं तो पोस्ट भी करते रहता हूँ यूट्यूब में, तो उसमें भी अपडेट कर दूंगा। आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर अप करते रहो, ऐसा नहीं है, करते रहो, आप रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वीडियो डालूंगा तब आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं, आप पढ़ते रहो, राइट। गाइड मैं करूँगा, और हाँ, आई प्रॉमिस यू वीडियो बनाऊँगा, तो नो नीड टू वरी, राइट, नो नीड टू वरी अबाउट। और बाकी कुछ मैसेजेस?
Okay, Tushar have, I think yes, yeah, I have, Tushar has messaged. Okay, लेटेस्ट में फ़िलहाल तो कुछ आया नहीं है मैसेज. आई विल वेट, आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस, नो नीड टू वरी. Ask your doubts, I am here to help you. Okay, I have received new message from Tushar, like, okay, I am also learning and how to use SQL for data cleaning and trying to learn store procedure. In one recent interviewer asked me about query optimization and SQL scripting and also indexing. And also, this is a second message from Tushar, like, can you please explain how it is useful and what are the major use of that, and also what is the use of views in data analytics role, right? Okay, okay. mm, so you are asking like about query optimization, storage, procedure, indexing, views, right? I think, I hope you are asking that, like stored, procedure, indexing, views, and what query optimization. So let me break down things, and let me tell you in a interview kind of way, or I would say real project kind of way. So first of all, like you have asked about query optimization. So query optimization is about making your SQL queries run faster, right? Suppose like use where filter smartly, avoid select asterisk, like asterisk means star, like use proper joins, and also limit subqueries or CTE. Like if there are lots of CTE, there will be lots of confusion and there will be performance issue in the database. So these are the main thing for query optimization, and it's important because in real companies, I mean real work, or real, I mean in companies or real projects, slow queries waste both time and server cost. Let me tell you why. Because right now we are working in a small database. The database in companies where if you go and work there na, so once you write a query, it takes around 2 to 3 minutes to get the output from that query. So it takes time. So that's why it is like important, because slow queries, I would, like I told you, waste both time and server cost, right? Second thing you asked about store procedure. Okay, trying to learn store procedure. Okay, I would say these are like pre-written SQL scripts stored in database, if you understand, and it is useful when you want to automate the repetitive task, right? Repetitive task means, I would say, daily reports, or like bulk update means at the end of the day. Like suppose manager ask you to send you some reports, so that time you give them bulk update. So for that thing, it is like, I would say, pre-written SQL scripts just to automate the repetitive task. And as a DA, if you work with the dev team or the BI tool or the BI developer team, the store procedures are often used behind dashboard, if I am not wrong. And third, what you have asked, about indexing, like you have told SQL scripting and also indexing. So indexing, it is like, if I give you an example, think of a book index, like, so what it does, it helps SQL find the right row faster. That's it. If a column is searched a lot, like suppose I would say employee ID,
or product id or suppose customer id kind of thing. So creating an index on it make query performance much better, especially useful when you are analyzing lots of rows, I would say million of rows. So that time indexing is useful. And also you have asked one thing, views, use of views in data analyst role, right? Okay, use of views. Views is like, I would say a view is like a saved SQL query kind of thing. Means for data analyst, I would say like views are used to like normalize, or you would say standardize some business logic, like cleaning customer data and sharing that logic with the developer. Means BI team, BI means like BI developer team or Tableau developer team, it's like that. So instead of writing a long query every time, you create a view once and just query that. So that's it, that's all about views. And so yes, at the end I would say all these are super useful in real world scenario, I mean real life company, real projects. So keep going on. You are asking the right question, Tushar, and let me know if you like want me to go much deeper in these topics. I would make a video on that also. Just mail me because I will forget. Just mail me about what topics you need so that I can make a full video breakdown for these topics, and I will definitely include the topics that you have asked them. And I am planning also, like if it is asked by most of the people, then I will also add this in my SQL course to Tushar, let me tell you. So good, thanks Tushar, like for asking doubts. If you have more doubts you can ask me, and I hope I have clear your doubts. And okay, any more doubts, any more doubts, uh, ask me doubts, I can help you out. Just a minute, I have received notification. What? No, not yet, not yet. Okay, okay, Shiva, you have asked a question like, can we connect Power BI with Snowflake and query the data in Power BI? If no, can if no, can do it any other way? If no, can we do it in any other way? Like I would say yes, Power BI can connect with Snowflakes directly. You are right. Where you to like how you can use it, like you can use it by like get data option. There is a get data option is there in Power BI. So in that, what you do, you can select or you can choose snowflakes in that. Malab, as a source, you can select or choose snowflakes, and then you enter your server, I think warehouse data, yeah, server warehouse database, and role details in that, right? And once connected, you can write the SQL queries inside Power BI using there is option like advanced option while importing the data. So it is very useful in filtering or shaping the data. So as I have told in earlier doubts as well, SQL is important. See, it is important everywhere. And thanks for asking this question, Shiva. Here at least like we could know, like each and every viewer had also know that we can use SQL queries inside Power BI as well in advanced option. But let me tell you one thing, if for some reason direct connection does not work, sometime it happens, suppose the direct connection did not work, you can also try one thing, like you can export data from Snowflake to CSV, right, and then load that into Power BI, right. So that is one thing you can do, like you can export data from Snowflakes and to CSV or Excel, and then load that into Power BI. So this is one thing. If
for some reason, suppose direct connection does not work, that time you can do it. But yes, ideally Power BI plus Snowflake, uh, I would say it is seamless kind of thing. And just make sure proper access and drivers are set up. First make sure that. And also let me know if you have any doubts in this stream. I will help you out, Shiva. So any more doubts? Any more doubts? Any more doubts? Okay, any more doubts? Wait a minute. Just a minute, guys. Just a minute. Just a minute. Let me see, like, is my voice clear or something? My voice clear or something? Let me check. Mhm. I hope my voice, yeah, right. So my voice is also clear, no need to worry about. uh, okay. ओके, सो विकास आपने और एक मैसेज किया है, लाइक आपने दो मैसेज किया, सॉरी अभी। लाइक कैसे काम होता है, जैसे रॉ डेटा है भैया, कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ करूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। मैं आपको देख के बहुत चीज़ सीख रहा हूँ, थैंक्स फॉर दैट। बट भैया मैं बहुत डीमोटिवेटेड हूँ, सब आता है लेकिन कब क्या यूज़ करूँ वो पता नहीं, नो वरीज। और आपका सेकंड मैसेज है, भैया आप प्लीज़ यूट्यूब नहीं छोड़। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा भाई यूट्यूब, प्लीज़ आप ही हो जो मेरे को कुछ भी कुछ सिखा सकता। अरे ऐसा नहीं है, मेरे से बहुत बेहतर बेहतर लोग बैठे हैं यूट्यूब में जो मेरे से अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज मैं देख रहा हूँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यूट्यूब से। मैं तो ये देख रहा हूँ, मतलब आप लोग भरोसा कर रहे हो मेरे को, मेरे लाइव स्ट्रीम में आ रहे हो, वो थैंक यू फॉर दैट। और आपने क्या पूछा, प्लीज़ आप ही हो जो कुछ, ओके। और मेरे कॉलेज में सीनियर ईगो, सीनियर लोग बोले या कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, क्यों पूछूं, टीचर अलग रहते हैं सब अपना। हाँ देखो यार, स्कूल कॉलेज में यही रहता है, बिकॉज डाउट्स क्लियर थैंक्स टू, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं कॉलेज में था तब, उस टाइम तो जियो नया नया आया था, तब जाके हम लोग टीचर से डाउट पूछना कम किए थे, क्योंकि उस टाइम जब नेट एक्सेस मिला था तो यूट्यूब वीडियोस देखते थे। और उस टाइम यूट्यूब में उतने वीडियोस नहीं थे कोई भी, आई मीन कोडिंग का या फिर सीक्वल का या फिर डेटा एनालिस्ट का, क्योंकि नया नया इंडिया में यूट्यूब आया था और इंडिया में बहुत टैलेंट है। बस अपॉर्चुनिटी पहले नहीं था, जियो का अपॉर्चुनिटी पहले नहीं था। पहले तो 1 GB मिलता था BSNL में, तब कब कौन क्या वीडियो बनाए, क्या अपलोड करे, कौन देखे, उस टाइम का एरा था। मतलब इंडिया में इतना टैलेंट है, बट ठीक है नहीं था अपॉर्चुनिटी। 2014-15 में जियो आया, अपॉर्चुनिटी खुला। आप देख रहे हो आज के डेट में इंडिया में जितना अच्छा कोडिंग टीचर्स और कोडिंग के लोग हैं, आई डोंट थिंक दुनिया में कहीं मिलेंगे। मतलब इंडियन टीचर्स आर बेस्ट, मैं तो बोलूँ, फॉर कोडिंग, फॉर सीक्वल, फॉर क्वेरी, भाई बहुत टैलेंट लोग हैं। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे से बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं। सो आपको सीखना हो तो उनसे भी सीख सकते हो, मैं भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आता है, सो एवरीवन इज़ लर्निंग। और एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, एक बात ध्यान से, जो तुम फील कर रहे हो वो मैं भी फील कर चुका हूँ। ये सब कन्फ्यूजन, कब क्या यूज़ करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, ये सब नॉर्मल है, नो नीड टू वरी। विकास, सही डायरेक्शन मिलने में टाइम लगता है, हर चीज़ का टाइम लगता है, और उसके लिए तुम यहाँ हो लाइव स्ट्रीम में, नो नीड टू वरी। और मैं यहाँ तुम लोग के लिए ही हूँ, तुम लोग के डाउट्स क्लियर करने के लिए। जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है उस एक्सपीरियंस से ही मैं उतना आपका डाउट क्लियर कर पाऊँगा। मैं भी कोई लाइक महान वैसा नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा तो सिंगल डिजिट एक्सपीरियंस है। तो जितना हो पाएगा मैं क्लियर आउट कर पाऊँगा डाउट। और जैसे कि आपने पूछा लाइक कहाँ क्या यूज़ करना है,
तो एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, जैसे कि रॉ डेटा आता है, सबसे उसमें सबसे पहले तुम देखोगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैंने सीखा था फर्स्ट वर्क एक्स में, मैं क्या देखता था, पहले देखता था नल वैल्यूज़ है कि नहीं। ये मेरा पहला काम था विकास, राइट। जब भी रॉ डेटा आता था पहले नल वैल्यू चेक करता था। मेरे को आज भी याद है, मेरे मैनेजर ने मेरे को सिखाया था। फिर नल वैल्यू है कि नहीं चेक करता हूँ। सेकेंड चीज़ मैं देखता हूँ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है या नहीं। सबसे मेन चीज़ है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है या नहीं, वो चेक करने के लिए, राइट। वो मैं चेक करता हूँ पहले, मतलब सेकंड में, नॉट पहले। पहले तो नल वैल्यू चेक होता है। थर्ड चीज़ मैं चेक करता हूँ कि फॉर्मेट सही है या नहीं, जैसे कि डेट्स, कैटेगरी, टाइम डेट, वो सब। फिर ये देखता हूँ कि मेरे स्टेक होल्डर ने मेरे को क्या पूछा है, मतलब कि आ, मतलब क्या है कि उन स्टेक होल्डर को क्या समझाना है, कैसे समझाना है, किस फॉर्म में समझाना है, वो मैं देखता हूँ। तो चार चीज़ पहले चेक करना रहता है। नल वैल्यूज़ चेक करना है, डुप्लीकेट्स चेक करना है, फॉर्मेट सही है या नहीं चेक करना है, और क्या पूछा है और क्या आउटपुट देना है ये चेक करना है। तो ये चार चीज़ मैं सीखा था अपने वर्क एक्स में, पहले वर्क एक्स में जब रॉ डेटा आया था मेरे पास, राइट। और अब तुम जैसे सीक्वल से क्लीन कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था पाइथन पैंडास भी है, दोनों टूल्स काम करता है। बस यूज़ केस के हिसाब से चूज़ करना रहता है। जैसे कि आपने कहा ना कन्फ्यूजन होता है, मैं बोल रहा हूँ यूज़ केस के हिसाब से चूज़ करना होता है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ कि सपोज़ अगर डेटा डेटाबेस में है तो सीक्वल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो जब मैं काम करता हूँ तो डेटाबेस कनेक्ट रहता है। जब मैं बोलता हूँ ना कि वीपीएन कनेक्टेड है, मैसेज थोड़ा लेट आएगा, सो वीपीएन के थ्रू आई हैव माई डेटाबेस कनेक्टेड टू देयर डेटाबेस, क्लाइंट का डेटाबेस। तो अगर डेटाबेस मतलब अगर डेटाबेस में है, कनेक्टेड है, तो सीक्वल यूज़ करो। और अगर फाइल है जैसे एक्सेल फाइल या जेसॉन फाइल या सीएसवी फाइल, तो पाइथन या एक्सेल का यूज़ करो, राइट। और तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारा डाउट सिर्फ इतना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तुम्हें आता है, राइट। तुमको बस स्टार्टिंग लाइन खोजना है, एंड दैट्स ओके। वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं बताऊंगा, मैं हेल्प कर दूंगा। और जैसे तुमने कहा ना कि एक प्रोजेक्ट सीरीज़ करना है, वो मैं करूँगा, बिकॉज लोग पूछ रहे हैं, तो नो डाउट मैं श्योरली उसको करूँगा, लाइक सीक्वल और पाइथन यूज़ करके। क्योंकि लाइक मैक में पावर भी है तो यूज़ नहीं होता है। तो सीक्वल पाइथन का एक वीडियो बनाऊँगा, अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब मैं उसके बाद वाला वीडियो सीक्वल पाइथन टैब्ल्यू में यूज़ करके बताऊँगा, राइट। करूँगा वीडियो, ऐसा नहीं है। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा हूँ। तुम लोग ही हो जिनके वजह से मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। और जैसे कि तुमने कहा सीनियर्स कुछ बोलते हैं तो भाई इग्नोर करो। वो सब इग्नोर करो यार, सीनियर्स कौन क्या बोलता है वो कोई टेंशन नहीं, जस्ट इग्नोर देम। और मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तुमको प्राउड रहना चाहिए, तुम अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो डोंट वरी। जस्ट मैं तो बोल रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस करो, सब अपने आप लाइन में बैठेगा। तो नो नीड टू वरी अबाउट, राइट विकास। और कोई भी डाउट हो आप और पूछ सकते हो, राइट। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर डाउट्स? ओके, एनी मोर डाउट्स? ओके, Shiva has asked a doubt, like can you give a website name for mini project you mentioned? um, Website name, like I was searching in YouTube, so I know one website name that is called Kaggle, I think. Kaggle, right? Let me write this: www.kaggle.com. You can go in this, right? You can go and check. Like I have seen in YouTube, like people are suggesting, but I have not went to the website. What I have seen in YouTube shorts, like that, like in that you will get real data set, notebooks like SQL, Pandas, Power BI. You can use anything you want in that data set.
or and one thing I was using earlier, right, when I was learning back in 2018-19, that time I was using something called SQL Zoo करके, I think so. SQL Zoo dot net. If I'm wrong, you just go in this website and see SQL uh, Zoo dot net. Uh, Something like that. SQL Zoo dot net. Something like that is there. Like I was using back in 2017-18 in my first work ex. So in that SQL Zoo, what I used to do, like I used to practice SQL queries on live database. Like project level questions are there, if I am not wrong. So two websites I know. One is from like YouTube Reels I come to know, and one is like what I have used. So you can go and check these two websites. And related to other websites, you can do one thing. You can mail me, like I have given you the mail. You can just mail me related to this website. I will search in internet and I will share those websites in the mail, right? So you just write a mail. I think I have given my mail ID. I am giving it once again. With me at the gmail.com. I have given the mail ID again in my live stream. So you can mail me. I will give you more websites. I will search and then I will give you more websites, right? It's there in internet. I will search and I will see what are the best one, and I will then provide you. But for now, I would say one is kaggle.com, kaggle.com, and one is sequelzoo.net. So these are the two websites you can explore and see like how is it and all. So thank you, Shiva. Like any more doubts you can ask me, and like you can mail me. I will mail you all the websites, uh, like whatever is legit and whatever is good to go with. I will mail you that, right? And anything more? ओके, विकास has sent two more messages. Like मैं कॉलेज में 8.6 CGPA चल रहा है मेरा, बट मेरा थर्ड ईयर में जाऊँगा 1 अगस्त से 5 सेम स्टार्ट है। मैं BCA डिग्री कर रहा हूँ VIT जयपुर। नाइस। मैंने डेटा वेयर हाउस और एक पावर BI में मोबाइल सेल्स में प्रोजेक्ट बना। तो प्रोजेक्ट तो आपने किया है, दैट्स अ गुड थिंग। बट भैया कोई बोलता है ये सब प्रोजेक्ट यूट्यूब से कॉपी है, तो ये वो पता नहीं भैया क्या करूँ। अरे कहाँ से देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही सोर्स है, इंटरनेट, जहाँ से आप प्रोजेक्ट लेके कर सकते हो। कॉपी नहीं बोलूँगा बट इंस्पायर बोलूँगा। तो आप आपके मतलब कोई भी फ्रेशर हो, फ्रेशर के पास एक ही ऑप्शन है, या तो इंटरनेट, या तो गूगल, या तो यूट्यूब। सो नो नीड टू वरी। मतलब तुम टेंशन मत लो, यूट्यूब से सीखना, मैं तो बोल रहा हूँ कोई बुराई नहीं है। जो समझ के बनाया गया प्रोजेक्ट होता है ना, वो तुम्हारा ओरिजिनल काम होता है, राइट? तो तुमको अगर वो प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा ओरिजिनल काम है, राइट विकास? और इंटरव्यू में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को कहे तो तुम कॉन्फिडेंटली उसका लॉजिक, यूज़ केस और स्टेप बता दो। फिर कोई भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे भी तुम 8.6 CGPA लाए हो, तुम ऐसे ही लाइक टॉप परसेंटेज में हो, राइट? आई मीन टू से तुम ऑलरेडी ट्रैक में हो। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, और ये सब टेंशन मत लो कि यूट्यूब से सीखे हो क्या होगा एंड ऑल। ये सब कुछ नहीं है, तुम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, राइट? तुम एटलीस्ट सीख तो रहे हो। बाकी लोग यही देखो, बाकी जो सीख रहा होगा उसका तो कॉन्फिडेंस टूट गया होगा अभी तक कि भाई यूट्यूब से क्या सीखना है।
लोग बोलेंगे कॉपी है या नहीं, एटलीस्ट तुम सीख तो रहे हो। तो अगर इंटरव्यू में सबको बिठाया जाए और पूछे क्या किया हो, तो तुम एटलीस्ट आंसर तो दे पाओगे कि तुमने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। बाकी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग उस टाइम सोच लिए थे कि यूट्यूब से सीखा हुआ प्रोजेक्ट काम करनी है। तो नो नीड टू वरी, यूट्यूब या इंटरनेट से सीखना कोई बुराई नहीं है। तो गो विद द प्रोजेक्ट, राइट विकास? एंड नो नीड टू वरी, मैं तो बोल रहा हूँ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक विकास। और कोई भी डाउट पूछना हो पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। जस्ट अ मिनट। Okay, Shiva, you have asked one question like what are the SQL concept that usually company use, right? Okay, that usually company use, like you mentioned CT and all. Can give some more can you like give some more concepts? Okay, I will give you in short, like I would say core SQL concepts like joins, group by, like having, order by. These are the main core concepts. Case when, distinct, limit or top depend on the SQL database. That are the core SQL concept, and that is must known for it. And in join, like I would say most of the time you will use left join and inner join, right? What I would say as per my experience. And for data cleaning, it will, like what we use a lot is like lower and upper for text cleanup, coalesce for like changing the null value and all, and is null to handle those null values. And related to date and time, I would say get date, date diff, date at. These are useful for data cleaning. And for like if you want to like build some advanced logic, you could go for like Windows function like row number, rank, lag, lead, dense rank, rank and all. And CT, as as like you have told, like CT like for temporary name result set. I would say when you use Windows function at that time CT will be useful, because the query where you write Windows function, in that query, if you want to find out the data, you have to use that query as a CT, then only you can use, right? And for I would say for real world scenario, like insert, update, delete statement, these are the main thing. And union, accept, these are also the main thing. I would say insert, update, delete, union, accept, these are the main things in real world scenario. And if you want, like if you have asked in like previous doubts related to Power BI, so I would say connecting SQL to Power BI or Python is also useful. And if you want some example, like I would give you an example as well. Like suppose for um, uh, suppose take some sales data set. So in that sales data set, to get top 5 customer per region, you have to use rank and partition by, like that kind of thing. So like this concept are used for building a small use case scenarios, right? Right, Shiva? And any more doubts? Just a minute, stay in this. Just a minute, let me check. Uh, is everything okay? Is my stream healthy? Okay, right. Stream is good, good to go.
and let's get back. Okay, so Tushar, yeah, I have received your reply right now. I mean, a live chat. Like, I am really getting confused about how to use all these things in real data and how it will be helpful for further analysis, right? So, I would say, like, I totally understand, Tushar. Like many learners, or I would say many fresher, feel this way, and I have also felt the same way when I was learning. So I would say knowing SQL concept or like Python concept like Pandas or NumPy concept and applying them to real world is where the actual learning happens. So like for that you have to do projects and all, I would say. And if I give an example like how it will be helpful in further analysis, let's get back to the sales table, right? Imagine if you have received a messy data like sales table, or from that sales table employee table who have done more sales. So in that scenario you can see all are separate tables, like employee table doing sales, and second table is the sales table where employee have done all the sales. So they are all separate. So now what happened, like if you want to analyze the total sales per employee and want to find out the employee of the month, so this is where SQL comes in. Here you will connect everything and all. So this is, I would say, where it is used for, I would say, in further analysis in real world. Means if I tell you in short, suppose what happens is, like if there are two tables, like joins help in combining multiple tables together, then group by like summarizing total sales by I would say date, month, category, employee wise. Where function is used like filtering data for particular month, product, like that. Then rank row number, as I told you, for employee of the month, I mean top performer, or like top sales done by product wise, like product wise top sales, like that. Then wait a minute, then I would say CT use, like once you use row or rank number, CT is used, CTE, common table expression, for making complex query easier to read. And case when also use, case when for creating custom logic, like if sales greater than 1000 then high, or greater than 2000 it's high profit, like that. And then indexing, like it helps speed up dashboard and large queries, like that. So yeah, I hope I have cleared your doubts. And don't worry, I would say, Tushar, like this confusion is part of learning. So just pick a real data set and try solving small problem using SQL. So we have one more message from Lucifer Shadow. Like let me greet him. Hi Lucifer, welcome to live stream. Welcome to live stream, Lucifer. And again, like Tushar has asked me one more thing in live stream. Let me read this. I think, yeah. So what Tushar have asked, like one more important question mostly asked in the interviews, like how to handle blank and null values in SQL. What will be the perfect answer for the question? So I would say in SQL, handling null and blank is very important for like I would say accurate analysis. For accurate analysis, first thing first, you have to handle null, duplicates value, blanks, everything. mm, so you are asking like how to handle and how to understand. Like I would say, first of all, understand the difference between them. Null means no value, and blank is like two commas will be there, I mean empty string, that is called a blank, especially in text field. And if you ask me more deep dive into null,
then I would say detecting null is easy. Like what we use in uh, our work X, we use like is null or is not null to find the missing values, right? And once you find the null, you can use coalesce function. Like coalesce function is used to give the data, I mean depends on the data set to find the missing value, right? Like if there is any missing value, coalesce can be used to either fill the data or either find the data, right? And also for aggregation, like function like sum or average or max, they automatically ignore null values, but I make sure to handle them beforehand if needed, right? Not me, each and every data analyst you ask. So if you ask me in one line, then handling null and blank ensure data quality and prevents misleading analysis in dashboard or reports. So that's all about it, how to handle blanks and null value in SQL. So anything else? Okay, I've got a message from Lucifer again. Like hi, like yeah, hi. And logic building is hard. How can I improve my logic building skills? I just start coding 1 month ago in Python. So I would say, like if I give you an example, I would say logic building is like I would say learning maths, or I would say it's like learning how to ride a cycle. You don't learn to ride a cycle in 1 week, right? Suppose you remember your past days, like when you start to learn cycling, that time I would say like it was not a 1 week kind of thing. It took time, it took daily practice to make sure your brain is sharp like the muscle. I mean to say, your mind and your muscle should be connected for riding a cycle, and for that it took lot of time. You have not learned to ride a cycle in 1 week, right? So first thing first, if you want to build logic in anything, in Python or something in SQL, then it will take time. And how to improve it, I would say start with start with solving pattern problem and loops. Like do small problems like uh, finding out the number, or like I would say using range, a range kind of thing in Python starting phase. And also once you learn all the basic, make sure you move to hacker rank or lead code easy section, because lead code shows a like the sections or the question they use are very tough. So better if you are moving to lead code, move to the easy section. And then before writing a code in your laptop, make sure you dry run it. What is dry run? Dry run is like just writing a code in paper pen, understanding the logic, draw the loop, like step by step draw the loop in paper, use pen and paper, pen and pencil, that is dry run. And also I would say you should watch beginner friendly YouTubers. Don't just copy, pause, try and explain to yourself like what you understand from that video. So I would say logic building take times, and I would say to practice daily to build up strong logic. And don't rush, just be consistent. Lucifer, don't rush, don't just be consistent. You are just 1 month, means you have took the first step, that's a big thing. Most of them don't even start learning. So it will take time, just be consistent, right? uh, and Lucifer, if you want to know anything else, you can just message me in live chat, or I have given my mail ID as well, so you can message me in that. I will help you out.
custom made. Let me check. Have I received? Haven't received anything. Let me check once. Okay. Yeah, okay. I have received a message from Tushar. Mm, and Tushar has asked me like DAX यूज़ करके मेजर्स एंड कॉलम्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है, लॉजिक समझ नहीं आता है, क्या करना चाहिए फॉर डीपर एनालिसिस। देखो डैक्स यूज़ करके मेजर और कॉलम, मतलब आप यही पूछ रहे हो राइट? मतलब डैक्स यूज़ करके मेजर और कॉलम बनाने में दिक्कत होता है और लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? आई वुड से अगर मैं एक सिंपल तरीका आपको बताऊं लॉजिक बिल्डअप के लिए, डैक्स के लॉजिक को समझने के लिए, तो डैक्स एक्सेल में जैसा लग मतलब डैक्स एक्सेल जैसा लगता है, लेकिन पावर बीआई का ब्रेन है, इफ़ आई एम टेलिंग यू लाइक दिस और इफ़ आई एम सेइंग इट रॉन्ग। मतलब एक्सेल जैसा यूज़ होता है डैक्स, जो जो मैंने सीखा है वो बोल रहा हूँ। मतलब डैक्स जो है वो एक्सेल जैसा काम करता है, लेकिन पावर बीआई के सेटअप में रहता है, राइट? इसका मेन काम क्या है? सपोज़ अगर मैं बोलूँ कोई मंथ कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? मंथ मंथ या तो मंथ नहीं, कुछ एक अगर एग्जांपल दूँ तो ओके, एक एग्जांपल बोल सकता हूँ, जैसे डेटा को कैलकुलेट करने के बाद का जो कॉन्टेक्स्ट लगता है, जैसे फिल्टर, रो, रिलेशनशिप, यही डैक्स का लॉजिक है, राइट? तो डैक्स का लॉजिक समझने के लिए मैं अगर आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, तो पहले एक चीज़ आप क्लियर करो माइंड में कि मेजर और कॉलम क्या होता है। ये मेन चीज़ है। कॉलम क्या होता है? जैसे कि रो बाय रो कैलकुलेट होता है हर रिकॉर्ड के लिए। और मेजर क्या होता है? जैसे एग्रीगेट करता है, जैसे सम, काउंट, एवरेज काइंड ऑफ। ठीक, पहला चीज़ ये रखो अगर लॉजिक समझना है डैक्स का। दूसरा चीज़ ये रखो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब कि जैसे टेबल का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे बदलता है, तो मेजर का आउटपुट कैसे बदल के आउटपुट में आता है वो सीखो। मतलब जैसे कि वेस्ट का जो सेल्स है तो वो कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी रिसेंटली किया था, लास्ट मंथ ही, वेस्ट सेल्स इक्वल टू, जैसे कैलकुलेट किया था मैंने, टोटल सेल्स, सेल्स रीजन इक्वल टू नॉर्थ, इस टाइप का, इक्वल टू वेस्ट, इस टाइप का मैं करके मैं यूज़ किया था कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। मतलब क्या होता है, टेबल का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तो मेजर का आउटपुट भी बदलेगा, राइट? ये कॉन्टेक्स्ट है। थर्ड चीज़ ये है कि हर डैक्स फार्मूला के पीछे एक क्वेश्चन समझो कि सपोज़ मुझे टोटल सेल्स चाहिए सिलेक्टेड सिटी के लिए, तो मैं कैसे करूँ? तो सिंपल, टोटल सेल्स इक्वल टू सम सेल्स अमाउंट, लाइक दिस। तो हर डैक्स के पीछे का क्वेश्चन समझो, राइट? और प्रैक्टिस करो कुछ कुछ फंक्शन, जैसे कि सम एक्स, कैलकुलेट, फिल्टर, स्विच, डिवाइड, इस टाइप का। क्योंकि ये सब चीज़ से 90% जो एनालिसिस है वो सॉल्व हो जाता है। और बाकी प्रैक्टिस करते रहो, जैसे यूट्यूब तो है ही, और बाकी माइक्रोसॉफ्ट का डैक्स गाइड भी है शायद, समथिंग मैं देखता था, डैक्स गाइड लाइक डैक्स डॉट गाइड करके एक है, उसमें आप चेक करते रहो। उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो समझाते रहते हैं और ईजी है। मतलब मैं बोलूँ तो हर डैक्स लिखने से पहले एक सवाल बनाओ कि मुझे क्या निकालना है आउटपुट में। लॉजिक समझने के लिए एक मतलब विजुअल समझना ज़रूरी है, मैं अगर बोलूँ तो। और स्मॉल लाइक विजुअल्स बनाओ अपने नोट पैड में, जैसे कि कैसा क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके पीछे क्या सवाल रहेगा डैक्स का, आई मीन
पीछे सवाल क्या रहेगा, मतलब जैसे हर डेक्स के फॉर्मूला के पीछे क्या क्वेश्चन रहेगा वो सब आप एक नोट पैड में लिखो तो इजी रहेगा। और डेक्स सीखना लॉजिक बिल्डअप करने जैसा है, तो हर फार्मूला के पीछे एक थिंकिंग रहता है, तो उस सोच को समझने का बेस्ट तरीका है, राइट। तो मैं तो बोलूँ यूज़ केसेस बना के सॉल्व करो। आप लोग ऑलरेडी राइट ट्रैक में हो तुषार, तो प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो और रियल वर्ल्ड एग्जांपल करो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आई थिंक पावर बीआई का होगा शायद, मैं देखूंगा। पावर बीआई का मैंने सर्च नहीं किया रियल वर्ल्ड एग्जांपल, बट आई थिंक होगा, मैं एक बार चेक करना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक मैंने आपका डाउट क्लियर किया है तुषार। ओके, विकास का एक मैसेज आया है, लाइक आप प्रोजेक्ट बताओ जिसको रेज्यूमे में डालूँ तो लगे कि ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की तरह इंटरव्यू लगे। मैं मीन्स कि लाइक यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट काइंड ऑफ, ठीक है। तो मैं बोलूँ देख, हाँ विकास, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए सबसे मेन चीज़ मैं तो बोलूँगा नंबर्स पे ध्यान दो। मतलब ऐसा कोई डेटा सेट पकड़ो जिसमें ज़्यादा नंबर्स हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, राइट। बैंकिंग सेक्टर में क्या है, नंबर्स ज़्यादा रहता है, और जहाँ ज़्यादा नंबर्स रहेगा वहाँ पैंडास, मैट प्लॉट लिब ये सब बहुत काम आएगा, राइट। तो इसमें क्या रहता है, आप डिसीजन ट्री वगैरह कर सकते हो प्रेडिक्ट करने के लिए कि कौन सा कस्टमर रहेगा, कौन सा कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है, कौन सा कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब है, कौन सा कस्टमर छोड़ सकता है सर्विस को, इस काइंड ऑफ। तो इसमें क्या है, रिटेंशन स्ट्रेटजी वगैरह आप समझ सकते हो बैंकिंग लाइन में। और बैंकिंग डोमेन का इसलिए बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट खोजने के लिए, क्योंकि बैंकिंग में बहुत नंबर्स रहता है, और आप एक्सेल लो या तो आप सीक्वल लो, नंबर्स में ज़्यादा काम रहता है, राइट। तो आई वुड से गो फॉर बैंकिंग सेक्टर वाला काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, विकास। और बाकी मैं एक चीज़ देखा हूँ, बहुत लोग ये ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट करते रहते हैं, जैसे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, तो उसमें भी जा सकते हो। बट जैसे कि आपने कहा है कि आप को लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से देखने से होगा नहीं होगा, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो भाई आप बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्रोजेक्ट खोजो, वो अच्छा रहता है। मतलब ज़्यादा नंबर्स रहता है और कस्टमर ओरिएंटेड भी रहता है, और ज़्यादातर अगर आपको मैं बोलूँ तो कंपनी का प्रॉफिट कस्टमर के थ्रू ही रहता है। तो कस्टमर अगर रहा, तो अगर मतलब कस्टमर ओरिएंटेड अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया तो आपका प्रोफाइल भी स्ट्रांग रहेगा, और जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप बैठ रहे हो वो भी खुश होगा कि हाँ चलो कस्टमर ओरिएंटेड वाला एम्प्लॉय हमें मिल गया काइंड ऑफ। तो वैसे कुछ आप खोजो रिलेटेड टू बैंकिंग फील्ड। और मैं बोलूँ लास्ट में कोई भी, अगर मैं बोलूँ अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हर प्रोजेक्ट के अंदर बिजनेस प्रॉब्लम, उसका क्या क्या चीज़ आपने यूज़ किया, कौन सा क्वेरीज यूज़ किया और उसका आउटकम क्या है, वो मेंशन करना अपने सीवी में, राइट। तो वही सुन के आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए भी कुछ होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब आप प्रोजेक्ट बता दोगे तो प्रोजेक्ट के अंदर आप मेक श्योर ऐसा करना कि क्या बिजनेस प्रॉब्लम था, आपने उस बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया, कैसे आपने टैकल किया, लाइक कौन कौन सा बिजनेस आइडिया आपने लगाया, आपने क्या देखा, मंथली सेल्स देखा कि लाइक एम्प्लॉय रिटेंशन देखा कि कस्टमर रिटेंशन देखा, क्या देखा, फिर क्या क्या क्वेरीज यूज़ किया और उसका आउटकम आपने क्या निकाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर आप जब कुछ भी लिखते हो ना प्रोजेक्ट, आप ये सब चीज़ मेंशन करना। तो जितना आप मेंशन करोगे क्या है कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ इसने किया है, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट का डिटेल पता होगा तो ही आप
प्रोजेक्ट के अंदर जो है मेंशन कर पाओगे हर चीज़ को, राइट। तो अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर का हर चीज़ मेंशन किया हो तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यूअर भी खुश हो जाएगा कि हाँ आपने एक्चुअल में प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो नो नीड टू वरी। बैंकिंग सेक्टर का प्रोजेक्ट देखो, मैं तो बोल रहा हूँ सही रहता है, राइट। एंड एनी मोर मैसेज, कोई भी लाइव चैट हो प्लीज़ आप लोग सेंड कर सकते हो। Okay, Tushar, you have sent a message and it is deleted. Okay, you have sent one more message like, what is data pipeline and data flow in Power BI? Good question. Good question. Data pipeline, in short, if I would say, it is like end-to-end flow from raw data to report. Or if you go into specificity, I would say raw data, then cleaning the data and then making a report is data pipeline. And data flow, if you say, it is like cloud based transformation kind of thing, means it's cloud based transformation layer in Power BI service data flow. So this is the thing, means data pipeline is like, I would say, end to end from A to Z, end to end kind of flow from raw data to cleaning to reporting, right. And data flow is like cloud based transformation thing in Power BI service. So this is the I would say it is about data pipeline and data flow in Power BI. And I hope I have cleared your doubts. Still, if you have any doubts, uh, you can ask me in live chat. आई होप आई हैव रीड ईच एंड एवरी वन डाउट्स, मतलब मैंने सबका डाउट पढ़ा है, आई थिंक सो। आई होप मैंने सबका डाउट पढ़ा है। फिर भी स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, राइट। Anything, any doubt, let me check my message center, like is everything okay on something. Let me check once. Okay, we have got one more message from Tushar, right, and he have asked like, can you explain more deeper with an example? Okay. Deeper with an example. Okay. Let's think of an example, like suppose, huh, suppose let's take an example of I would say banking industry. Let's take for a banking industry, like suppose Axis Bank. So in that Axis Bank, if you say like what things we will have, like every day you will be getting Excel sheets with customer name or insurance sold or the insurance sold date, what is the insurance costing and all, and what are the locations. So I would say this is the raw data, and obviously this will be messy, this will be having blank, and this will be having lots of duplicates. Why? Because these are the raw data.
right? And if you do like step by step example via data pipeline in Power BI, I think yeah, you have asked data pipeline in Power BI. So first thing what you will do, as I have told you, you will connect to data. You will open Power BI and connect it to the Excel file, or if company is working on a SQL database, then you will connect to a SQL database. And this is the first step of your pipeline, that is the source, right? And as I have told you, you will clean the data. In data cleaning, what you will do, you will remove, first thing you will find if there is any blanks or not, and remove them or fill them, anything. Either you will remove them, or either you will connect to your stakeholders and fill them. Then remove duplicates. As I have told you, duplicates removing is the main thing. Then what you will do, you will make sure the mail IDs are in proper format, or the date is in proper format, right? And also you will check the names. In banking sector, you have seen like in form you have to write the first name, middle name, and last name. So make sure you check that also. Like you will split it, or you will do concatenation, all that thing will be done. So this is kind of transformation step, I would say. Then third point you will do, you will model the data. Like what you will do, like customer table, you will create a relationship between customer table and what insurance they have took, like that. Or customer table and related to the insurance what they have got, and that insurance detail will be in what table, insurance sales table. So customer table with insurance sales table, or customer table with I would say kind of insurance table, like is it health insurance or like that kind of things. So what is the use of this? This makes the analysis faster and it will be meaningful, right? Fourth step, uh, you will create DAX, like you will create measures using DAX. Suppose like total insurance sold, what you will do, you will do sum of price, like that kind of thing. Then insurance sold, like whatever the insurance the employees have sold, you will see the growth percentage. And you will see where in what locations, in what bank location uh, this month this insurance have been sold, and what is the growth per location per bank. So what it will do, it will add a logic and insight, right? So once everything is done, you will obviously design the dashboard, like bar chart you will design, or you will design pie chart, whatever the requirement of your stakeholder, like that you will do. So like this, the entire flow is called Power BI data pipeline, or data pipeline in Power BI. And second thing, you have asked about data flow, right? So data flow, suppose imagine you are getting a raw file, raw CSV file or raw Excel file daily from your sales team means the team, like insurance sales team, right? So rather than reporting all the step what I have told you above again and again, you can create a data flow in Power BI service. And Power BI service is a cloud based service, I have told you earlier. So like this, you can like make this thing reusable, or no duplication, or kind of centralized kind of thing. So this is what data flow is used in Power BI. And I think Tushar, you got an example, like deep down example, or deep dive example using the banking sector. Because Vikas has asked me one thing real related to real world projects, so I have told him about the banking sector project. So in this way you can also like in this way I have also given you an example related to banking field, right? Still, if you have any doubts, you can ask me. I am ready to help you out.
Tushar. Anyways, nice question, Tushar. Like, actually, people in my, I'm really happy to see that people in my live stream are mostly into asking doubts and asking deep dive question. Like, I have seen people are not much interested in this studying kind of thing, matlab coding or SQL kind of thing. But it is good to see that you people are taking interest in learning. So this is a good start, I would say. This is a good start and keep it up. Congratulations that you are learning this. So keep it up, I would say. And ask me more doubts. I can help you out as much as much as knowledge as I have. And if I am not able to help you out, I will search that thing in internet and I will help you out, right? Let me check once if I have received any. Okay, Lucifer, I have received your message. Like, any project good for learning, right? Even it's too easy. I have made number guessing game, but some people say it's too easy. Like, okay, see, let me tell you one thing, Tushar. No project is too easy if you are learning from it, right? Let me tell you this thing. What really matters is logic understanding. First thing, this matter the most is logic understanding. Second thing, like, if I ask you from that project, like, can you explain it to me? That's a big thing, I would say. You can, if you can explain that project to someone, then I would say it is a big thing and you are expert in that. Because if you are not expert in anything, you won't be explain that thing to someone else. So what really matters is understanding the logic and explaining it to someone else. That's, these two things are the most important thing if you are doing a project. And it doesn't matter the project is easy or hard. It might be easy for someone else, but if I ask someone who is new to uh, I mean Python or data analytics, and I will tell that guy, like, can you make a number guessing game? That guy will say, Arey, I am a fresher, how I can make it? I need to learn. So easy is just a mind game, no need to worry about. Make sure logic is understood by you and you can explain it easily to someone else. And I would say, like, keep building, brother. Like, Lucifer, keep building project. Small step leads to strong skills, let me tell you one thing. So no need to worry about it. And do projects, I would say. Don't listen to others like it is easy or something else. Doesn't matter. You will sit in the interview, you will give the interview, right, Lucifer? The guy who is saying it is a easy project, they won't sit in your interview. So don't listen to them. Just be yourself, do your project, do your learning, do your studies. What matter is that the project that you have made is being explainable to the interviewer in a easy way. And logic, like, if you understand the logic, then I would say it is good to go, Lucifer, right? And any more message? Any more messages? Okay, actually there is delay in messages. So yeah, I have received one message from Satish. Let me greet him. Like, hi Satish, welcome to live stream. Welcome to my live stream. So what questions do you have? You have asked two questions and I think both are same, like statistics in foreign, shall explain. Okay, statistics in
Inferential statistic, explain in detail. Okay. Inferential statistics, I think you are asking for that. Inferential statistics, right? Hmm. I would say one thing like descriptive and inferential statistics. If you are asking that, inferential statistics is all about what will likely to be happen. I think it is that. Uh, I think you are asking that, and inferential statistics. By example, if you are asking, I would say like test 100 product and decide the quality of 1 lakh product, like that. It is inferential statistics. Means this is a kind of predicting kind of thing, like predicting something about a larger uh, amount. I mean to say larger quantity based on a sample, right? Suppose like test 100 milk product and decide the quality of 1 lakh product, like that. In short, if I would say, like it is analyzing a small group and predict the behavior of the other, I mean other samples. It is like that, inferential statistics. And if I remember, we used to use z test, z test and t test regression in inferential statistics, if I'm not wrong. And one more thing what I have learned in college is that in inferential statistics, like I have done project as well, like it help us make smart decision from a limited data. Like I told you now, like you will test 100 milk packets and decide the quality of 1 lakh packets, like that. Means it help us make smart decision from limited data, right? So I hope I have explained your doubt. And let me see any other messages. Okay, Tushar has messaged me like thank you so much for explaining everything so clearly. Okay, welcome bro, welcome. And really enjoying the session and learning a lot. Thank you brother Tushar. And like everyone is welcome to my live stream. Ask me doubts. I have my, what do you say, like mail ID as well, so you can help me in that. I mean you can ask me doubts in that. I will help you out, right? So thank thanks to everyone, like you are asking me doubts and you are taking interest in that, so thank you from my side, I would say. And any more doubts? Actually, let me tell you, everyone, like those who are new right now, there is a delay in live chat that is being reflected in my screen because I am using VPN. That's why. So the thing is, I will read each and every messages uh, that I get in my live stream. Means as soon as I get those messages reflected in my live stream, I will reply to it. It might take some time to reflect in my live stream because I am using a VPN. That's why. So before I receive any message, let me just check my Telegram, like if I have received any message from here from my client. Oh my god. Okay, I have received one message from Satish. Like any example
basis to understand, like z test and p test example. Okay, if I tell you the example from the previous example what I have told you related to like the milk industry. Suppose let's take an example, you are working in a quality control at milk packaging company, and every package is supposed to contain like 1 liter. Let's take 1 liter of milk, like 1000 ml of milk. But one day what happened, you suspect that like the machine is overfilling the packet slightly. And what you do as a quality engineer, you or a quality controller, what you do, like you will take sample of 40 packets, and suppose we think of a scenario, what you find out that the average milk per packet in your sample is like it's overfilling na. I would say, like suppose average milk per packet in your sample is like mm, 10 ml extra, like 1010 ml, right? Because it's overfilling. So standard deviation, let's take 20 ml and sample size 40, as I've told you, 40 packets. So what will be your goal? First thing, like you want to test is the machine is really overfilling, or is this just a random variation. So here you will do three tests, like first hypothesis test you will do, like null hypothesis, that is average of 1000 ml, like if nothing wrong is there or not. Alternative hypothesis you will do, like average not equal to 1000 ml, like if machine is overfilling or underfilling, that you will see. Then you will apply z test, and then p value test, like in that you will compare the significance value. And if I tell you in concept wise, like z test, it will tell how far the sample average is from the expected value in z test. In p value, what you will get, like probability that the result is just random or not. And also, suppose if you get low p value or high p value, like that. Suppose if you get low p value, then that means the difference is statistically significant, like that. Or I mean if I say again, in z test, it will tell you how far sample average is from the expected value. In p test, you will get the probability that the result is just random. So this is how you can do the z test and p test with an example, right? Example like I have given you for sorry, for the like milk packaging industry. So I hope, Satish, I have cleared your doubts. I hope, and any more doubts, any more message? Yeah, hi Samarth. Hi, hi Samarth. Welcome to my live stream. Hi Samarth. Hi Samarth. Welcome to my live stream. I hope you have received my LinkedIn ID. I have sent you an mail in morning. I hope you have received it. And okay, I have received one more message from Satish. Like, understand, bro. Thank you. Okay, welcome, brother. Welcome, Satish. Like, if you have any more doubts, you can ask me in mail as well, or you can ask me in live stream. I am giving you my mail ID here. With me at the rate gmail.com. I have given my mail ID, Satish. Like, you can mail me if you have any more doubts in near future, or you can ask me in my live stream. I will help you out, right? So welcome, brother. Welcome. And Samarth,
I hope you have received my message. Yeah, because yeah, welcome to my live stream. Is everything okay? Let me refresh once again and see. Yeah, everything is okay. Uh, Let me check the health of the live stream first. Sorry. Any more messages? Let me put a message in my group, Telegram group about it. Just a minute. Okay, I have received message from Samarth. Like, yes, received. Thank you. Okay, means the mail. I think you are saying, yeah, yeah, the LinkedIn ID. You are saying. So you have received it, and I have also received the mail from you. Thanks for that. And also one more message from Samarth is like, can you tell me what is that you are doing today in the stream? See, the thing is, today on the stream, I am mainly focused on clearing live doubts and helping you all in real time. Like, let me be very frank, I was prepared to work on Python based data task that my client was uh, like my client was to give me the last week data, but still I am waiting for my client to share it. So they haven't shared it yet. That's why I'm checking my Telegram again and again. So in that meantime, I am making the most of this time by supporting everyone with the question and with learning. So once I receive the data set from my client for the last week, I will start working on Python. So till now I haven't received, so thought of clearing everyone doubts. So let
Let me check once in Telegram, like I received. Okay, okay. So I have received a message like there won't be any task today for data analytics in Python. Like my client have messaged me, so it's 12:30, so I should go back to sleep. And thank you everyone for joining my live stream. Thank you for asking me doubts. Thank you for believing in me. So thank you everyone. So let's meet tomorrow again in my live stream in my morning. I will do two live stream twice, in morning as well as in like night time after dinner. So you all can join me in that meanwhile. I will be clearing everyone doubts and you can see me work uh, side by side. So, and let me tell you one thing, the morning part in my morning live stream, I may not be this much verbal because my like renovation is going on. So, background noise will be there. And the thing is, in my second live stream, like in the evening live stream, like after dinner, I will be verbal because there is no work, I mean renovation work going on. So my sound will also be clear and it will be good for both of us to learn and understand in a quiet environment. So let's meet tomorrow. Let's uh, catch up tomorrow. So bye bye. Take care. And no message till now. So bye bye. Good night. And still I have given my mail id. If you have any doubts after this live stream, you can just mail me. uh, I will be happy to answer everyone. So thank you everyone. Bye bye. Take care and good night.